morning, friends. Good morning. On the occasion of the two-day technical conference on supply chain, logistic, transportation, World Expo 2023, organized by the Logistic World and Conference 2023, headed by Kishore Pinglekar and his team. Inauguration has been done by respectable, honorable Vivek Vibnevar, our Transport Commissioner. Mr. on the dais, Mr. Kishore Pinglekar, Mr. Daniel, Madam Karad, and Madam Surekha Deshmukh and dignitaries, respected dignitary, eminent personality, delegate attending the two-day conference. I am seeing that a lot of members from the transport fraternity, Suresh Khosla along with me has come, and Pramod Baal sir with his team, who is the president of the Association of the Transport Union, are here. First of all, I would like to convey my congratulations to Kishore Pinglekar and his team, and I convey my best wishes for the success and the cooperation extended by the Raju Gotale to make this conference a success is highly appreciable. I am honored and pleased to be invited as a keynote speaker on the most important subject of present time, that is the National Logistic Policy (NLP). As I recollect, on 17 September 2022, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji launched the National Logistic Policy at Vigyan Bhavan in presence of Mr. Piyush Goyal, our Union Minister of Commerce and Industry, Srimati Nirmala Sitharaman ji, Finance Minister, Nitin Gadkari ji, our Minister of Road Transport Highway, Jyotirada Scindia, Minister of Civil Aviation, Ashwini Vaishnav, Minister of Railway, Sarbanda Sonawal, Minister of Port, Shipping and Waterways, Dharmendra Pradhan, Education, Som Prakash, MOS, Commerce and Ministry. This shows the importance and concern of our Honorable Prime Minister with a vision to take our country to a different height. And I was hearing the 90-minute speech of our Honorable Prime Minister. In 88 and 89 minutes, it touched upon that logistic cost in India is higher in the globe. That is 14%, and is to be brought down to the 9% in the next 3-4 years with a target plan. We appreciate the concern of our Honorable Prime Minister, and definitely the logistic cost is higher as compared to the other developed nation. And we are a developing nation, and very soon we will be a developed nation. We all have to fulfill the vision of our Prime Minister, Government of India. Government is very actively working on it. And as a stakeholder, All India Motor Transport Congress, AIMTC, which is a non-political, non-religious organization, apex body for the truckers, representing around 90 lakh of truckers all across the country, and 3,500 district, taluka, state level association affiliated to it. It is our responsibility that how we jointly can make it happen. As a citizen also, it is our responsibility, and then as a stakeholder, we are trying our level best to update the government that how it can be achieved. Now, there is a time schedule, 10 minutes
allotment has been given, so I will be trying to brief, not elaborate. It is a very lengthy subject. We can debate a day long on it, but I will highlight the bullet point on that. See, logistic cost is why it is high. Because the cost of our operations are going up. Diesel is going up. Toll has been hiked 8 to 9% every year. Tires, I can openly say that there is a monopoly of the tire company. They are taking the undue advantage of it. Our spares part, administrative cost, salaries in way to the drivers, living cost, daily cost, all are going up. How we can reduce this cost? This should be our focus. And we have suggested that diesel should be brought under the GST. One nation, one tax. There should be uniformity of the diesel prices all across the country. And since last 1 year, we are fortunate and lucky that there is no hike in the diesel prices. But you see that every day the diesel prices was to be increased or decreased, but mostly it was increasing only. So we have suggested a quarterly review of the diesel prices. And the most important, seamless, human interference free movement of vehicle all across the country, conducive atmosphere for the motorist, for the truckers to ply their vehicle on the national highway and the state highway. Post GST, the industry was optimistic that all the bottlenecks will be removed. But till today, there are several bottlenecks. The journey is not seamless, and route checking, and you will be surprised to note that whereas the one side we have the vision to bring down the logistic cost from 14% to 9%, in spite of all the technology available with us. Modern day vehicle, highly infrastructure for which we are paying a toll of 8 to 9 rupees per kilometer. Still, the average running of vehicle is around 280 to 300 kilometers, where it can easily fly around 500 to 600 kilometers. If this bottleneck and there is a seamless journey, definitely we will have the optimum usage of the technology, high investment which we are making in the vehicle and the infrastructure. If my vehicle runs more per kilometer, my fixed costs are there, whether it is for 300 kilometers or 600 kilometers. So definitely this will help in reducing the logistic cost. Now, what are the bottlenecks? Definitely, it is a conference on the logistic and for the all our concern to make the success. I can say that one is the toll. We are not against the toll collection. We are ready to pay the toll upfront on very first day of the year. Alternative toll methodology should be adopted by the government. As you see on the toll naka, there are queues, lot of time spent, fuel wastage for the idling of the vehicles. It hampers the seamless journey. And next is the check post. We feel that in today's days, when the country is developing and the technology is easily available, with the Vahan, with the e-Parivan, with the M-Portal, Sarthi, any person sitting anywhere can put on his mobile the vehicle number and find out the documents, whether it is a valid documents or not. Every consignment is been carried with the e-way bill. No consignment, no truck can move from A to B without the generation of the e-way bill. And with the technology, it is monitored on a real-time basis by the agency,
कहाँ से माल भरा, कहाँ जा रहा है, कितने किलोमीटर सफ़र करेगा, कितने दिन में पहुँचना है। अगर वो इतने दिन में नहीं पहुँचा तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सो व्हाट आई वांट टू point out that everything is technology adopted. So there should be a less human interference. We are not against the checking of the vehicle en route, but it should be random, reason to believe, and you will surprise that this is the figure given by IIM Calcutta. The study had been done by them, and Honorable Minister Nitin Gadkari ji has stated in the Parliament at various occasions that due to the time spent and the fuel wastage on the toll naka and the check post, we are losing around 1,78,000 crore annually. So this is the wastage, which is we have wasted, which is not going to any pocket. किसी का फायदा नहीं हो रहा है. It is going down the drain. And Safe Life Foundation is the Pune-based organization doing a lot of work with the department for road safety. Recently, they had released their report that truckers pay 48,000 crore annually in way of private corruption. So what we have suggested that alternative toll collection methodology, abolition of the check post, checking en route should be technology adopted, reduction of the toll. We are जहाँ पर नियम है सरकार का, NHAI का, सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि एक स्ट्रेच टोल का अगर आपने बनाया है, उसकी अगर वसूली हो गई है, उसका पैसा लोगों ने उसका भुगतान कर दिया है, तो अगले दिन से उसको 40% कर देना चाहिए. लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा है. In spite of our highlighting the issue to the NHAI, to the ministry, so we are requesting that the notified rule made by the NHAI and the government, immediately there should be a reduction of the 40% of the toll charges where the cost has been recovered. Now coming to the basic amenities on the highways every 50 kilometers, which is the need of the hour, because now we are not in the 1940s, 60s, 70s. We are in the 20th century and proceeding to the 21st century. So this is needed. We have a meeting recently in which we all appreciated that it should be done, and at least Maharashtra government has given the directive for to make a policy on it. And we have also requested that every district should have a truck terminal. It should be mandatory. जैसा मंदिर बनाते हैं, शादी का हॉल बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, पेट्रोल पंप बनाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, प्राइमरी स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, तो कोई भी ये यूडी का, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का ये प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए कि यहाँ पर ट्रक टर्मिनल की इतनी जगह सुविधा होगी, उसका स्टडी बेस्ड हो कि ये डिस्ट्रिक्ट में कितनी गाड़ियाँ आती हैं, बाहर से कितनी गाड़ियाँ आती हैं, एक दिन में कितनी गाड़ियाँ रुकती हैं, और सब ट्रांसपोर्टर कितने हैं वहाँ पर जो अलग अलग बिखरे हुए हैं, वो एक जगह पे वहाँ पर काम करें. शहर के जितने मैकेनिक है एक जगह पे काम करें, शहर के जितने टायर शॉप है एक जगह पे चले जाएं, तो शहर में जो कंजेशन है वो खत्म हो जाए. वन शॉप एमिनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड एट वन प्लेस. ठीक है, इससे समय लगेगा और अवश्य समय लगेगा, लेकिन एक शुरुआत इसकी होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये शुरुआत महाराष्ट्र से ही होगी. देन इकोनॉमिकल वायबल फ्रेट स्ट्रक्चर. आज ठीक है, हम मानते हैं कि कंपटीशन है, डिमांड सप्लाई का जमाना है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाए हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने डायरेक्टिव दिए हैं, एडवाइजरी दी है, फेडरल सिस्टम है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इकोनॉमिकल वायबल रेट फिक्सेशन कर दीजिए, जिस तरह आप टैक्सी की, ऑटो की करते हैं. इसका कारण पीछे देखा जाए तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उद्योग के साथ में 20 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और इसमें 85% जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऑनर प्लस ट्रकर है. एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है.
अगर आज देखेंगे तो कट थ्रोट कंपटीशन है। कहीं तो हम भी एक प्रयास कर रहे हैं अपने मेंबर को एजुकेट करने का कि आप लागत पे भाड़ा लीजिए, कॉस्ट बेस्ड फ्रेट स्ट्रक्चर लीजिए, आपके पर किलोमीटर खर्चे इतने हैं, आप इतना लेंगे तो आप सस्टेन करेंगे। लेकिन कल ही मैं नितिन गडकरी जी का एक भाषण सुन रहा था जो मुंबई में कर रहे थे कि पॉवर्टी इज द मेन कंसर्न इन द इंडिया व्हिच हैज टू बी एड्रेस्ड। सो अगर रेट फिक्सेशन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दे विल फील प्रोटेक्टेड। उनको पता होगा कि सरकार ने भी डायरेक्टिव दिया कि इतना हमारे को लेना है। तो एक बड़ी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना, गरीबी को ना बढ़ने देना, अनएम्प्लॉयमेंट ना जनरेट होने देना, सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उनको अपना कारोबार करने देना। दे आर द एंटरप्रेन्योर। मोदी साहब बोलते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, ये ना कि एंटरप्रेन्योर बन के अनएम्प्लॉयड हो जाए, रोजगार ढूंढते फिर। तो दे आर द themselves they are entrepreneur, abiding all the regulation of the government by paying all the taxes without any violation। क्योंकि एक गाड़ी मालिक है, वो जब भी गाड़ी लेता है पहले फाइनेंस लेता है, उसका लोन की भरपाई समय से करता है, गाड़ी को डीलर से लेता है, सरकार को देता है, फिर आरटीओ में जाके रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स भरता है, सालाना टैक्स भरता है। और ये आज दे आर द मेन पीपल विच आर द मेन पिलर फॉर द सप्लाई चेन। मैं कोविड का उदाहरण दूंगा। जब हम व्यक्ति से व्यक्ति डरता था, हम घर में अपने बच्चे से भी हाथ नहीं मिलाते थे, इतना घबराहट थी। इतना तक था क्या कईयों के घरों में कई वैसे ट्रेजेडी हो गई, लेकिन वो अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सके। लेकिन उस समय आप देखें पीछे, सोचें, ध्यान से सोचें कि उस समय ये जो ट्रकर थे और जो ड्राइवर थे, इन्होंने अपनी जान को हथेली में रखकर ये अनुसूचित किया कि कोई भी देश का 130-135 करोड़ भारतवासी भूखा नहीं सोए। चाहे वो फूड ग्रेन हो, एसेंशियल कमोडिटीज हो, वैक्सीन हो, मेडिसिन हो, सभी को उन्होंने एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी जान को हथेली पर रखकर लेके आए। ढाबे भी सभी बंद थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। कोई एनजीओ ने लंगर उनको दे दिया, ठीक है, तो कोई टायर शॉप, कोई स्पेयर पार्ट, कोई भी कुछ नहीं अवेलेबल था। हम घर पे जाते थे तो पहले जूते बाहर निकालते थे, कपड़े आके धोने में डालते थे। तो वो उनको दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये जब वो नहीं रहेंगे, मैं आज ही बात कर रहा था किसी से, इंटरनेशनल रोड यूनियन है, हम बोलते हैं कि ड्राइवरों की कमी यहाँ पर है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि जब उनसे बात हुई तो बोलते हैं कि वी आर फेसिंग ए क्राइसिस। तो पूछा क्या, इन विच वे यू आर फेसिंग द क्राइसिस? बिकॉज वी आर फेसिंग द ड्राइवर शॉर्टेज। उन्होंने बोला यू आर पेइंग, इतनी आपकी कंडीसिव एटमॉस्फेयर है, इतनी आप अच्छी तनख्वाह देते हैं। बोलते द प्रॉब्लम इज दैट अवर ड्राइवर जो पॉपुलेशन है, दिस इज इन द एज ऑफ 50 to 60 years and next generation not coming. We are a young India. That is the main advantage of India. And population is the main advantage. हमारे जो ड्राइवर है 30, 40 व 50 के हैं, 30 का 30 वर्ष चला सकते हैं। उसके बाद में हम इतने डेवलप हो जाएंगे, ये उद्योग इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा, देश का माहौल इतना कंडुसिव हो जाएगा कि लोग खुद इसमें चल के आएंगे, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट को भी दूर कर पाएंगे। आज आप देखेंगे कि MBA करने के बाद, हाईली पढ़ने के बाद आज जो नौकरियां नहीं हैं, और नौकरियां हैं तो बहुत उनको बिजनेस के माध्यम से उनको हायर किया जाता है। और मैं गौरव से कह सकता हूं कि हमारा ट्रकर आज भी 35 से 40 हज़ार कमाता है। बेशक वो इन वे ऑफ द सैलरी, इन वे ऑफ द इंसेंटिव, इन वे ऑफ द फ्यूल, इन वे ऑफ द भत्ता, इन वे ऑफ द रिवार्ड। सो बट पीपल, व्हाई नॉट पीपल आर कमिंग? बिकॉज एक बैड नेम मिल गया इंडस्ट्री, यह प्रोफेशन ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमें मिलजुल कर सुधार करना है, क्योंकि ये आवश्यकता है देश की टुवर्ड ए डेवलप्ड नेशन। सो वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी, स्क्रैपिंग पॉलिसी के ज़्यादा विस्तार में ना जाता हुआ, क्योंकि आज सब्जेक्ट वो नहीं है, समय भी काफ़ी होते जा रहा है कि उसका भी किस तरह से ड्रॉबैक होगा। तो इंसेंटिवाइज हो, सॉफ्ट लोन हो, ऑल्सो इट इज़ वॉलंटरी नॉट मैंडेटरी, बट उसका भी देखना चाहिए। गति शक्ति, जो कि गति मीन्स स्पीड एंड शक्ति मीन्स पावर। हाउ द कंट्री कैन डेवलप with the speed and power, with the gati and shakti in 4 years.
पीयूष गोयल जी ने एक प्रेजेंटेशन हमें दी थी, जहाँ पर हम देख के ये चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं था, हम तो खाली लॉजिस्टिक कॉस्ट बोलते थे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होनी चाहिए। 17 मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट और ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कोऑर्डिनेशन एक्सिक्यूशन टू बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी, सेविंग कॉस्ट, क्रिएटिंग जॉब्स एंड जो रेड टेपिज्म है जिसमें समय लगता है वो खत्म करने के लिए और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन। यानी ये चीज़ होगी तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, देश बहुत तेजी से तरक्की करेगा। इसके पहले कि मैं अपने जो मुझे मौका दिया गया आज उसकी समाप्ति करूं, मैं हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हमने on behalf of the road transport sector, we would like to appreciate, we would like to thank you for the support, for the guidance given to us from time to time, and your activeness for resolution of the issues is logical and is highly appreciated. And road transport sector आज पूरे देश भर में सर आपकी चर्चा हो रही है, हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं देश भर में जाता हूँ, उनकी इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अब सर को फोन करो, हम ये महाराष्ट्र का एक मतलब मैं कहता हूँ कि खून में है, कल्चर में है। कभी भी हमने कोई भी अधिकारी को फोन किया है, दे आर ऑलवेज सपोर्टिव। और ये नहीं टालम टोली की आपने कभी बात नहीं, आपको ये पता होता है कि भाई इससे ये नुकसान होगा। मैं जिक्र करना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर के बारे में जो 1 अप्रैल से होना था, अगर वो होता तो लाखों गाड़ियाँ खड़ी हो जाती। लेकिन ये महाराष्ट्र था, ये सर की एक पहल थी, समय के पहले इन्होंने मिनिस्ट्री को लिखा। लैक ऑफ द ट्रक विल बी, एक ही नासिक में है, गाड़ी कहीं से पूना से नासिक नहीं आ सकती। इन्होंने लिखा और उसकी अमेंडमेंट आ गई। सर ने भी अमेंडमेंट के ऊपर किंतु परंतु थे डिपार्टमेंट में, लेकिन सर ने बोला आप आदेश निकालिए। सो सर वी आर वेरी थैंकफुल। और जो आपने पिछले दिन ही हमारी जो मीटिंग हुई है शंभू राजा देसाई ऑन द डायरेक्टिव ऑफ एकनाथ शिंदे जी, और उसमें आपने जो मुद्दे सारे रखे मंत्री साहब के पास, उसकी भी हमें बहुत उम्मीद है कि आप उसको जल्द से जल्द जो होने लायक है उसको रिजॉल्व करेंगे, जिसमें ना कोई स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो। हम रेवेन्यू के खिलाफ नहीं हैं, हम तो वैसे व्यक्ति हैं कि पैसा देना चाहते हैं, हम साफ सुथरे तरीके से विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी दिक्कत से हम देना चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो जो मुद्दे हमारे वहाँ पर डिस्कस हुए थे वो उसको आप आगे लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी अपेक्षा है आपकी तरफ से पूरा देश को, महाराष्ट्र के नहीं वातुकदार पूरे देश को है। तो मैं एक बार फिर पूरे रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, और यही आशा करता हूं कि आपको आगे भी इसी तरह का हमें सहयोग मिलता रहेगा। नॉट गोइंग ऑन एलोबरेटिंग द वेरियस इशूज़, और ये इशूज़ हमने मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इसी तरह का एक सिम्पोजियम जहाँ पर कि अडानी यूनिवर्सिटी ने अहमदाबाद में किया था, वहाँ पर सुरेंद्र अहिरवार जी जॉइंट सेक्रेटरी लॉजिस्टिक्स हैं, वो भी उपस्थित थे हमारे साथ में। ये सारे मुद्दे हमने उनको पास दिए हुए हैं और हर एक फोरम में हम देते हैं कि क्योंकि एक सही रास्ता, सही दिशा और सही परिणाम निकले। एट लास्ट आई वंस अगेन कन्वे माय कांग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड फ्रूटफुल आउटकम फ्रॉम योर एफर्ट्स। यू आर मेकिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, आपने देखा है कि देश भर में आपने जाना है, एंड आई वुड सजेस्ट आप करेंगे भी, बिकॉज की बड़ी इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स यहाँ पर बैठी हुई हैं। जब आपसे मुलाकात हुई तो आप भी यही दिशा में सोच रहे हैं। प्रेजेंट पेपर विद सजेशन टू द कंसर्न अथॉरिटी थ्रू कॉन्फ्रेंस। थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर इन्वाइटिंग मी एंड द लव एंड अफेक्शन यू हैव गिवन टू मी। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।